गुड इवनिंग एवरीवन, माय नेम इज़ साध्वी सिंह और मैं आपके साथ लाई हूँ एक और नया सेशन जो हम सीरीज़ चला रहे हैं अपनी CBI APP माइनर लॉज की, जिसमें हम MCQs प्रैक्टिस कर रहे हैं बेसिकली सारे माइनर लॉज के। तो आज मैं आपके साथ जो लेके आई हूँ वो है कंपनीज एक्ट। आई होप आपको ये सीरीज़ अच्छी लग रही हो, पसंद आ रही हो और आपकी प्रिपरेशन में यूज़फुल हो। अगर आपको पसंद आ रही है तो आप इसे ज़रूर प्यार करें। और हमारे एक बैच भी चल रहा है फॉर माइनर लॉज। अगर आपको लगता है कि आपको माइनर लॉज के कॉन्सेप्ट समझने हैं और अच्छे से प्रिपेयर करना है तो आप उसको भी बैच को भी ज्वाइन कर सकते हैं, है ना। और आई होप कि अगर आपको कोई भी और तरीके किसी भी तरह का डाउट हो तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। मैं कोशिश करूँगी पूरी और हमारी टीम भी पूरी कोशिश करेगी आपके सारे डाउट्स को सॉल्व कर सके। लेट्स स्टार्ट विद आवर क्विक सेशन। तो हम जो कर रहे हैं वो है कंपनीज एक्ट। पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, है ना। तो पहला क्वेश्चन कहता है द स्टैट्यूटरी फॉर्मुलेशन ऑफ डायरेक्टर्स एंड ड्यूटीज अंडर कंपनीज एक्ट 2013 हैव बीन स्पेसिफाइड इन विच सेक्शन। तो सेक्शन 178, 177, 166 या 165। तो आंसर विल बी सेक्शन 166। अब ये बोल रहा है विच सेक्शन ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 डील विद द कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो कौन सा सेक्शन है जो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी डील करता है अंडर कंपनीज एक्ट? 36, 30, 136, 135, 133, 134. The right answer will be 135. The provision of Companies Act 2013 relating to application to tribunal for prevention of operation and mismanagement is contained in which section? Section 241, section 349, 361, 344. The right answer will be 241. Okay, let's start with another question. Which provision under the Companies Act 2013 provide for the right to a member of a company to file an application before the tribunal for relief in cases related to operation? इनमें से कौन से केसेस हैं? 241 में है, 242 में है, 201 में है या 206 में है? तो राइट आंसर विल बी 241. Dash has to provide by making regulation for any class or class of companies which may file a self prospectus with the registrar at the stage of first offer of securities. NCLT, SEBI, IBBI, director of company. What will be the right answer? SEBI. Minimum number of directors in a public company कितने हो सकते हैं? 3, 10, 12, 2. The right answer will be 3. An associate company in relation to another company means a company in which that other company has a significant influence but which is not a subsidiary company. Let's move to question number 7. An associate company in relation to another company means a company in which that other company has a significant influence but which is not a subsidiary company and include a joint venture company. B, a company in which other company has a majority influence. C, a company which include a wholly owned subsidiaries. D, a company in which the company hold majority of share. The right answer will be A. Let's move further. Which one of the following is the correct? इनमें से कौन सी ऑप्शन जो है करेक्ट है? अ पब्लिक कंपनी कैन बी formed with a minimum of 3 person. A private company can be formed with a 2 or more person. Memorandum of association is not required for registration of a company. Article of association is not required for registration of a company. The right answer will be B. The right answer will be B. Okay. Let's move further. The verification of the registered office shall be furnished to the registrar within a period. तो वेरिफिकेशन जो है रजिस्टर्ड ऑफिस में कितने दिन तक में चला जाना चाहिए? 30, 60, 90 या 120? The right answer will be 30. Let's move further. How much amount of the profit of a company can be distributed as dividend among its shareholder? कितना परसेंट जो है शेयर होल्डर्स में एज ए डिविडेंड बढ़ सकता है? तो it's not 10%, 15%, 5% या no fixed. Of course not fixed. Okay, let's move further. The capital with which a company is registered is called
जिस कैपिटल के साथ कंपनी को रजिस्टर्ड कराया जाता है, हमें बताना पड़ता है ना कि इतनी कैपिटल के साथ रजिस्टर हो रही है हमारी कंपनी, कितनी कैपिटल है, तो वो कंपनी उस कैपिटल को क्या बोलते हैं, वर्किंग कैपिटल, सब्सक्राइब कैपिटल या ऑथराइज कैपिटल या नन ऑफ द अबव. द राइट आंसर विल बी ऑथराइज कैपिटल. लेट्स मूव फर्दर. In which of the following cases the court cannot order rectification of instrument? इनमें से कौन से केसेस में कोर्ट जो है रेक्टिफिकेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट नहीं करवा सकता है? Let's go with the options. Where the instrument through fraud does not express real intention, where the instrument through mutual mistake does not express real intention, where the instrument is the articles of association of a company, where rectification can be done without prejudice to right of the third person. The right answer will be C, where the instrument is the article of association of a company. अब बताओ article of association का of course आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन का जो कॉन्सेप्ट है वो कहाँ दे रखा है? पार्टनरशिप में, एनआई में, कंपनीज में, आईपीसी में. आईपीसी में दे रखा है, किस में दे रखा है बताओ? तो सी ऑफ कोर्स कंपनीज एक्ट में दे रखा है. लेट्स मूव फर्दर. इट्स वेरी इजी. व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट एन इनकॉर्पोरेटेड कंपनी? इनकॉर्पोरेटेड कंपनी के बारे में कौन सी बात सच है इसमें से? इट्स लाइफ डिपेंड ऑन द लाइफ ऑफ इट्स मेंबर, इट्स नेशनैलिटी डिपेंड ऑन द नेशनैलिटी ऑफ इट्स शेयर होल्डर, ऑर्डर इज नॉट कंपल्सरी, एज सच इट इज नेवर डाई. तो बताइए क्या आंसर सही है? डी, एज सच इट नेवर डाइज. इट्स नेवर डाइज. इनकॉर्पोरेटेड कंपनी नेवर डाइज. आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन आर नॉट टू बी रजिस्टर्ड इन केस ऑफ. आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन किन केसेस में रजिस्टर्ड नहीं किया जाता है? तो पहला पब्लिक कंपनी के केसेस में लिमिटेड बाय शेयर, अ कंपनी लिमिटेड बाय गारंटीज, अनलिमिटेड कंपनी, ए प्राइवेट कंपनी लिमिटेड बाय शेयर. तो राइट आंसर विल बी अ पब्लिक कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स. Let's move further. Which of the following statement is not correct? इनमें से कौन सी स्टेटमेंट है जो करेक्ट नहीं है? A company cannot have more than one manager. A company can have more than one manager. A firm cannot be appointed as a manager. A manager can be appointed for a 5 year. The right answer will be B. A company can have more than one manager. A director appointed to fill up a casual vacancy will hold office. कब तक होल्ड कर सकता है वो ऑफिस? 5 साल, 3 साल, अप टू नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग या अप टू एक्सपायरी ऑफ आउटगोइंग डायरेक्टर्स टर्म. तो राइट आंसर भी अप टू एक्सपायरी ऑफ आउटगोइंग डायरेक्टर टर्म. अकॉर्डिंग टू द कंपनीज एक्ट 2013, द मिनिमम नंबर ऑफ पर्सन रिक्वायर्ड टू फॉर्म अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को फॉर्म करने के लिए मिनिमम नंबर्स कितने लोग के चाहिए, मतलब कितने लोग होने चाहिए जब हम प्राइवेट कंपनी को फॉर्म करेंगे बेसिकली, है ना? तो 1 2 3 4. द राइट आंसर विल बी 2. ठीक है. लेट्स मूव फर्दर. इन केस ऑफ प्राइवेट कंपनी एज पर सेक्शन 268 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, द मिनिमम पेड अप कैपिटल इज. मिनिमम पेड अप कैपिटल कितना होना चाहिए? नो मिनिमम अमाउंट प्रिस्क्राइब 1 लाख, 5 लाख, 10 लाख रुपीज. द राइट आंसर विल बी नो मिनिमम अमाउंट प्रिस्क्राइब. द फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग ऑफ कंपनी मस्ट बी हेल्ड. फर्स्ट एनुअल मीटिंग जो है कंपनी की वो कब हेल्ड होती है? within 9 months from the date of closing of the first financial year, within 12 months from the date of closing of the first financial year, 15 months from date of closing of first financial year, 3 months from date of closing of the first financial year. The right answer will be within 9 months from the date of closing of the first financial year. Let's move further. Which among the following remedies is available for a person who acted upon a false prospectus? जो भी पर्सन, अगर आपने कोई फॉल्स प्रोस्पेक्टस इशू करा है उसके बेसिस पे कोई इंसान एक्ट कर देता है, तो इनमें से कौन सी चीज़ें हैं जो रेमेडीज हैं जो अवेलेबल हैं उस पर्सन के पास? तो डैमेजेस फॉर फ्रॉडुलेंट मिसरिप्रेजेंटेशन, कंपनसेशन फॉर अनट्रू statement, damages for non-compliance with section 26. What will be the right answer? All of the above. Let's move further. Under the Companies Act, every person subscribing to the memorandum must take at least कितना होना चाहिए, कितना शेयर लेगा at least? 100, 20, 10, 1. Right answer will be 1. Let's move further. An application for prevention of operation and mismanagement in a company should be made to High Court, Central Government, NCLT या Register of Company. What will be the right answer? Right answer NCLT. Option C will be the correct answer. Let's move further. It deals with the internal management and affairs of a company. कौन सा internal management affairs of a company से deal करता है इनमें से? Prospectus, Article of Association, Memorandum of Association या Debenture? The right answer will be Article of Association. Let's move further. To safeguard interest of shareholders through the class action suits, an application may be made to the tribunal. किस को कौन सा ट्रिब्यूनल को जाएगा बताइए? The right answer बताइए. NCLT,
NCLT, any one of the above, registrar of company या registrar of regional director. What will be the right answer? NCLT. बताओ, अब बताओ section 8 जो है, section 8 of the Companies Act contains provision relating to incorporation of, wait a minute, हाँ, section 8 of the Companies Act 2013 contains provision relating to incorporation of companies, formation of companies with charitable object, effect of registration या effect of memorandum and article. The right answer will be formation of companies with charitable object. Who is authorized to issue license to section 8 company? मतलब कौन authorized है section 8 में companies को license issue करने के लिए? NCLT, any one of the above, registrar of company या regional director. बताइए, regional director, ये कोई option B गलत दे रखा है इसमें. A company shall be deemed to be unable to pay its debt. A company shall be deemed to be unable to pay its debt if the company has failed to pay the sum within 21 days, if execution process returned unsatisfied, if tribunal proves inability. इन तीनों cases में हम मान लेंगे कि जो company है is not able to pay his debt. Minimum number of persons जो required है to incorporate a public company, which is 7. Okay. A private company can commence business as soon as it receives. प्राइवेट कंपनी जो है अपना बिजनेस कमेंस कब से कर सकती है, क्या मिलेगा उसको जिसके बाद से वो बिजनेस स्टार्ट कर? सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, लेटर ऑफ इंटेंट, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, नन ऑफ द राइट आंसर विल बी ए, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन. Which among the following regarded as the most important document of a company? इन सब में से कौन सा सबसे ज्यादा most important document माना जाता है कंपनीज में? एनुअल रिपोर्ट, प्रोस्पेक्टस, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन. राइट आंसर विल बी डी, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन. क्वेश्चन नंबर 32, व्हाट इज द अपीलेट अथॉरिटी फॉर द ऑर्डर पास बाय नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल? NCLT. अपीलेट अथॉरिटी क्या होगी अगर कोई भी ऑर्डर NCLT ने पास किया है? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होगी, हाई कोर्ट होगी, कंपनी कोर्ट होगी, कंपनी बोर्ड कमेटी होगी. द राइट आंसर भी सी, कंपनी कोर्ट. बेसिकली वो ये बोल रहा है कि NCLT में से कोई मैटर गया है, वो उसमें वहाँ पे ऑर्डर्स पास हो गए या जो भी जजमेंट आ गया हमारा क्या हुआ है, तो फिर उसके बाद आप कहाँ पे अपील कर सकते हो? तो इनमें से किस में अपील कर सकते हो आप? कंपनी कोर्ट में. ठीक है. अंडर विच प्रोविजन विल मेंबर बी लायबल फॉर रिडक्शन ऑफ स्टैट्यूटरी मिनिमम नंबर्स? ठीक है. तो इनमें से कौन से सेक्शन में लायबल किया जाएगा फॉर रिडक्शन ऑफ स्टैट्यूटरी मिनिमम नंबर्स? 2 में, 3A में, 4 या सेक्शन 6 में? तो आंसर विल बी बी, 3A. द प्रोविजन ऑफ क्लास एक्शन सूट वाज इंसर्टेड ऑन रिकमेंडेशन ऑफ. द प्रोविजन जो है क्लास एक्शन सूट का, वो किसकी रिकमेंडेशन पे, कौन से उसके रिकमेंडेशन पे इंसर्ट किया गया था? बताइए. जे ईरानी कमेटी पे, जस्टिस इरादी कमेटी पे, जस्टिस कृष्णा अय्यर कमेटी पे, या राघवन कमेटी पे? तो बेसिकली द राइट आंसर इज जे ईरानी कमेटी. लेट्स मूव फर्दर. क्वेश्चन नंबर 35, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? हमें अच्छे से स्टेटमेंट पढ़नी है, देन वी विल गिव द राइट आंसर. तो इंडोर मैनेजमेंट अप्लाइज इन केस ऑफ नॉलेज ऑफ इरेगुलरिटी. इंडोर मैनेजमेंट डज नॉट अप्लाई इन केस ऑफ सस्पिशन ऑफ इरेगुलरिटी. इंडोर मैनेजमेंट अप्लाइज इन केस ऑफ फ्रॉडरी. इंडोर मैनेजमेंट डज नॉट अप्लाई इफ एजेंट एक्सीड अथॉरिटी. व्हाट विल द राइट आंसर? बी, इंडोर मैनेजमेंट डज नॉट apply in case of suspicion of irregularity. Okay, which one is incorrect with regard to liability of the prospector? इनमें से कौन सा चीज अनकरेक्ट है with regard to the liability of prospectus? ठीक है. Every person who is director at the time of issue, every person authorizing himself as a director, every promoter, expert whose consent has not been included. Expert whose consent has not been included. Okay, question number 37. Okay, which action can be taken when issue is made under section 42? The officer can be made to unlimited person. Money received must be kept in a separate bank account. Company can advertise the offer publicly. Company need to file return of allotment. The right answer will be company need to file return of allotment. Let's move further. In what way the doctrine of ultra vires is applied to the company? The activity should be confined within the object as specified in memorandum of association. The members are not allowed to file a suit on behalf of the company. Employees of the company must work during the office hours. A contract in which director committed breach of fiduciary duty. The right answer will be A. Which type of business structures are created by a process of incorporation? किस टाइप के business structures create किए जाते हैं by process of incorporation? Companies and sole
proprietorship, partnership and limited liability partnership, companies and limited liability partnership, या companies and partnership. The right answer will be C, companies and limited liability partnership. The central government has been empowered to conduct investigation into the affairs of the company under section 2(1)(10) of the Companies Act. तो इसमें से राइट आंसर क्या होगा? ऑन द रिपोर्ट ऑफ रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी इन पब्लिक इंटरेस्ट ऑन पासिंग ऑफ द स्पेशल रिजोल्यूशन ऑन ऑर्डर ऑफ द कोर्ट ऑफ ट्रिब्यूनल. द व्हाट विल बी द राइट आंसर? 1 and 2, 2nd and 4th, 3rd and 4th, 1st, 2nd, 3rd and 4th. The right answer will be 1st, 2nd, 3rd and 4th. All of the above are correct basically. Let's move further. Liability of director of public company towards शेयर होल्डर होता है, पब्लिक के थ्रू होता है, गवर्नमेंट के लिए होता है, कंपनी लॉ बोर्ड के थ्रू. कंपनी लॉ बोर्ड विल बी द राइट आंसर. चलो, द प्रॉपर अथॉरिटी फॉर कन्वेइंग अ जनरल मीटिंग ऑफ अ कंपनी इज द चेयरमैन ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, मैनेजिंग डायरेक्टर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, शेयर होल्डर्स. तो प्रॉपर अथॉरिटी फॉर कन्वेइंग अ जनरल मीटिंग को कन्वे करने की प्रॉपर अथॉरिटी किसके पास है? तो इनमें से बताओ. सी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर. A foreign companies intend to merge with the Indian company as per the relevant provision of in the Companies Act, Compromise Arrangement and Amalgamation Rules 2016. It need to obtain prior approval of Cabinet Committee on Economic Affairs, Security and Exchange Board of India, Reserve Bank of India, Department of Economic Affairs. Right answer will be C, Reserve Bank of India. Which of the following is most essential for a company? Memorandum of Association, share capital, prospectus, yes, certificate of incorporation. The right answer will be share capital. Okay, let's move further. For dissolution of a company, the tribunal shall pass order immediate after winding up order when affairs of the company are completed, wound up at the instance of the central government, at the instance of the company law board. तो राइट आंसर विल बी व्हेन अफेयर्स ऑफ द कंपनी आर इनकम्प्लीटेड, वाइंडेड अप. ठीक है. आर्टिकल ऑफ अ कंपनी कैन बी ऑल्टर्ड बाय, किसके थ्रू आर्टिकल ऑफ कंपनी ऑल्टर की जा सकती है? डायरेक्टर ऑफ द कंपनी, ऑफिशियल ऑफ द कंपनी, शेयर होल्डर, बाय पासिंग इन एन ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन, शेयर होल्डर बाय पासिंग अ स्पेशल रिजोल्यूशन. अब राइट आंसर क्या होगा इसमें? शेयर होल्डर बाय पासिंग अ स्पेशल रिजोल्यूशन. इससे कंपनी के जो आर्टिकल्स हैं उन्हें ऑल्टर किया जा सकता है. द कंपनीज एक्ट 2013 हैज प्रोवाइडेड दैट in listed companies appointments of independent director is mandatory and the independent director will be appointed. इनमें से independent director mandatory है अपॉइंट करना. किस में मतलब बेसिकली पूछ रहे हैं. कंपनी एक्ट जो है 2013 का वो प्रोवाइड करता है, प्रोवाइड दैट इन लिस्टेड कंपनीज अपॉइंटमेंट ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर इज मैंडेटरी. ठीक है. तो एंड द इंडिपेंडेंट डायरेक्टर विल बी अपॉइंटेड, किसके द्वारा अपॉइंट किया जाएगा? इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट 2013 मैंडेटरी है. तो कौन किसके द्वारा किया जाएगा? फ्रॉम द लिस्ट प्रोवाइडेड बाय द कंपनीज लॉ बोर्ड, फ्रॉम द लिस्ट ऑफ पर्सन गिवन बाय द मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड कंपनी अफेयर्स, फ्रॉम द डाटा maintained for this purpose, from the list of person nominated by the shareholder of the company. The right answer is from the data bank maintained for this purpose. On incorporation of a company, the registrar of a company is, in addition to the certificate of incorporation, issue a unique identification number, namely unique corporate number, corporate identification number, company identification number या unique identification number. The right answer will be company identification number. Let's move further. Under the Companies Act 2013, a private company can borrow funds for its financial needs from, इनमें से प्राइवेट कंपनी किससे फाइनेंशियल नीड्स जब पड़ेगी तो किससे फंड्स बोरो कर सकते हैं? डायरेक्टर बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, डायरेक्टर शेयर होल्डर्स एंड रिलेटिव ऑफ डायरेक्टर्स, डायरेक्टर्स बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, या किससे? तो राइट आंसर विल बी डायरेक्टर्स. ठीक है. पब्लिक कंपनी कैन बोरो मनी आफ्टर 1 year of incorporation, after obtaining certification of commencement of business, before incorporation is soon after incorporation, before incorporation. 51 पढ़ते हैं. This will be our last question. The recommendation of the Naresh Chandra Committee 2002 are related to corporate governance and audit, insolvency, bankruptcy code, defunct companies या criminal liability of promoters. The right answer will be defunct company. ओके ये जो हमने लेक्चर किया हमने 51 अराउंड क्वेश्चंस करे फ्रॉम कंपनीज एक्ट. आई होप आपको ये शॉर्ट एंड सेशन पसंद आया होगा. तो अगर आपको आया हो पसंद तो आप इसे प्लीज़ लाइक करिएगा और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा. एंड इफ़ यू वांट आई विल कम अप विद मोर सेशंस फॉर अ माइनर लॉस. है ना, आपको पता है कि हम सीरीज चला ही रहे हैं, हम पूरे माइनर लॉस कवर करेंगे, लेकिन उसके बाद भी हम ये भी कर सकते हैं कि हम PYQs भी पूरे करा सकते हैं. एटलीस्ट 5 years का PYQ तो मैं करा ही सकती हूँ. तो अगर आपको ठीक लगेगा तो हम वो भी लेके आएंगे, लेकिन उसके लिए आपको हमारी सीरीज़ को लाइक भी करना पड़ेगा और अच्छे रिस्पॉन्सेज दिखाने पड़ेंगे. तो मैं बिल्कुल आई एम साइनिंग ऑफ. साध्वी सिंह. बाय.